So the next topic in the continuation is relation between TF and chi-square distribution. So here is the theorem 1. If a statistic T follows T distribution with n degrees of freedom, then prove that T square follows F distribution with 1 and n degrees. If a statistics T follows T distribution with n degrees of freedom, then T square follows F distribution with 1 and n. अब ये स्टेटमेंट ये ऐसे भी आ सकती है, पूरा टेक्स्ट भी लिखा आ सकता है. If a statistics T follows T distribution with n degrees of freedom, then prove that T square follows F distribution with 1 and n degrees of freedom. This we want to prove. That is, if T follows T distribution implies T square follows F distribution with 1 and n degrees of freedom. इट मीन्स जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे न्यू वन और न्यू टू होता है या एन वन या एन टू होता है, तो हम क्या करेंगे, एन वन की जगह 1 पुट करेंगे और एन टू की जगह n पुट करेंगे. ठीक है जी. सो कमिंग टू द प्रूफ, let f follows f distribution with n1 n2 degrees of, then the probability differential of f distribution is given by. So I'm coming to the next screen. This is equal to you can write the differential like that. अभी हमने किया n1 by n2 या nu1 by nu2 raised to power n1 by 2. अब हमने पैरामीटर्स जो है n1 n2 ले लिए हैं. So we will write accordingly. So into f raised to power upon 1 plus n1 by n2 f raised to power n1 plus n2 by 2 with respect to the condition that this is less than infinity and n1 is greater than 0, n2 is greater than 0, right? अभी मैंने आपको कहा जो रिक्वायरमेंट है ऑन टेकिंग n1 is equal to 1 and n2 is equal to n star. So when you will take n1 is equal to n2, और दूसरा क्या है, हमें t स्क्वायर को और t स्क्वायर जो है वो हमें क्या लेना है, f लेना है, and t square is equal to f. It implies 2t dt is equal to df, right? तो जहां पे f है वहां पे क्या आ जाएगा, 2t dt. Thus the probability differential of f transform to किस में बदल जाएगा, नया वेरिएबल t में, क्योंकि हमने f को क्या नाम दे दिया, t स्क्वायर नाम दे दिया. तो जो भी डिफरेंशियल आएगा वो f में नहीं आएगा, वो t में आएगा. अब n1 को 1 पुट कर दिया, n2 को n, तो पहला जो टर्म है और ऊपर था n1 by 2, ये हो गया पावर 1 by 2. यहाँ था f रेज टू पावर, तो ये बन गया t स्क्वायर रेज टू पावर n1 by 2, n1 is 1, n2 is by 2 minus 1 upon बीटा 1 by 2 n by 2. ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी हमने. और यहाँ था न्यू वन n1 by n2, n1 is 1 and n2 is n, तो ये बन गया t square by n whole raised to power n plus 1 by 2 into 2t dt, where 0 less than t square less than infinity. ठीक है जी, क्योंकि 0 लेस देन f, वहां पे देखो व्हेन यू हैव टेकन t स्क्वायर इज इक्वल टू, वहीं पे ही आप लिमिट्स लिखोगे एज
0 is less than f less than infinity, it implies 0 is less than t square less than infinity. ठीक है, ये वहीं पे ही ये this is the derivation and this is that we have written only. So this becomes 1 by this becomes 1 by under root n, right? Then so 1 by under root n डिनोमिनेटर में हम इसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं. दिस इज बीटा 1 by 2 n by 2 1 plus t square by n raised to power n plus 1 by 2. ठीक है जी. So this becomes minus 1 by 2. इसको आप सॉल्व करेंगे, ये minus 1 by 2 हुआ तो t square into minus 1 by 2. This is t raised to power minus 1. यहाँ पे plus 1 पड़ा है, इसका मतलब t की टर्म जो है. So you can write over there. This is you have got minus 1 plus 1. ठीक है. अब ये जो टू है ना, इसको हमने डिसअपियर कर देना. उसका रीजन हम स्टेट करती हूँ नीचे क्यों है. t square is lying between 0 to infinity and what about t? It is lying. अब सारा जो है हमने अब इसको t में कन्वर्ट किया. वी आर नॉट फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ t स्क्वायर. ठीक है, t के साथ कनेक्ट करना है. सो दिस बिकम्स देयरफॉर फाइनली d of gt. दिस इज 1 by under root n beta 1 by 2 n by 2 1 तो ऑलरेडी था ऊपर. 1 plus t square by n raised to power n plus 1 by 2 into dt with respect to this condition. So we will write the factor 2 disappearing since the total probability in the range minus infinity to infinity is unity. ठीक है जी. So this is the probability जो हमने कैलकुलेट किया. क्योंकि देखो उन्होंने ये कहा है अभी टू फैक्टर को डिसअपियर कर दिया. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पीडीएफ की क्या प्रॉपर्टी है कि when we will integrate it with respect to the limits, whole domain, the answer must be equal to 1. तो अगर यहाँ पे अगर इसमें टू फैक्टर रह जाएगा तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा. So that's why we have to disappear it. So it is the, we will write, it is the probability function of student state distribution with n degrees of freedom. So what we want to prove that, therefore, we conclude that if T follows T distribution with n degrees of freedom, it implies T square follows F distribution with, ये दोनों तरफ से आ गया रिजल्ट. क्योंकि हमने F distribution में n1 n2 पुट किया इसको और F को क्या पुट किया, T पुट किया. तो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन किसकी निकल आई, T distribution निकल आई with 1n degrees of freedom. So this is all about today's lecture.